Okay, we'll continue. आम्ही फाटी किती पळयलेले. Last time what we saw, anybody remembers? Last time what we saw, how the children of Israel, we were in 1 Corinthians 10. Okay, we were in 1 Corinthians 10. God the Father, they tempted God the Father in the wilderness. So we saw in the wilderness how they tempted. They asked God, you gave us to drink, will you lay a table before us? So that we can have meat to eat. So that was the this. So now we'll see, we'll continue Numbers 11:31. Okay, I'll just read. And they went forth a wind from the Lord and brought quails from the sea and let them fall by the camp. And it were a day's journey on this side, and it were a day's journey on the other side, round about the camp. And it were about 2 cubits high from the face of the earth. Okay, so what he's saying, the Lord brought a wind. We will read that. They brought a wind. And quail is like a bird. This quail is like a kind of a bird, heavy weighted, slow movement. So it was moving about 2 cubits. A cubit is supposed to be from here, forearm. 1 cubit. Two forearms of mine. Maybe 6 feet. Joseph's 2 cubits. So high it was going. These birds. Where they were, it's like a chicken like they got. And a day's journey from either side of the tent. It was like a day's journey. Quite far it was. So the Lord brought it by the wind. Okay. And there we'll see. And the people stood up all the day and all the night and the next day and gathered the quails. He that gathered least gathered 10 homers. Homers is a measuring instrument. Okay, dry measure. And they spread them all abroad for themselves round about the camp. And while the flesh was yet between their teeth, it was chewed. Is, what is the meaning of before it was chewed? The wrath of God. The wrath of God is the wrath of God. The original word is wrath. The wrath is extreme anger of God. Was kindled. Against the people, and the Lord smote the people. With a very great plague. These people, my Konkani and Hindi will go later. These people were about to eat it, and while they were yet chewing it, the wrath of God, the extreme anger of God blazed against the people. And the Lord smote, the Lord killed the people with a very great plague. Plague is like a pestilence, like a incurable, not a incurable, like a infectious disease. Just spread and they died. And he called the name of the place Kibroth Tawa, okay? Because they buried the people that lusted, okay? This was the lust they had. Lust is, what is lust? This place
Tawa is known as the graves for the longing. Mean those people who longed for. Longing is something, lust is something that we long for, which is forbidden by God, that we long for. That is lust. Okay, now we just read in Hindi and Konkani. तब परमेश्वर की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे, जिससे कम बटोरा उसने 10 हमेल बटोरा, और उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए, क्योंकि यहोवा का कोप उन पर भटक उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोत ताव पड़ा, क्योंकि जिस लोगों ने कामुकता की उनको वहाँ मिट्टी दी गई। फिर इजरायली किब्रोत ताव के प्रस्थान करके I think झाले थे ना? 34 So इधर क्या हो गया? वो लोग पूछ रहा था क्या, उनको क्या पहला मिल रहा था? माना हम देखा ना, माना वो वेफर जैसा हनी, वो वेफर जैसा विथ हनी वो मिल रहा था उनको। वो बेजार पक गया। वो लोग बोलने लगा उधर मछलियाँ, लीच, आनियन सब मिल रहा था, कांदा सब मिल रहा था इजिप्ट में। यहाँ क्या, कुछ भी नहीं मिलता। परमेश्वर ने पानी दिया हमको, वो हमको एक बुफे, यू कैन ले अ टेबल, मतलब ये खाना दे सकता है, मांस दे सकता है। तो अभी क्या हो गया, परमेश्वर ने व्हाट इज विंड, हवा में एक सब ये क्वेल्स बोलता है, ये चिकन जैसा, बर्ड्स जैसा, हेवी वेटेड। ये कोयल इज शोइंग हेवी वेटेड एंड स्लो मूवमेंट, एंड दे वर मूविंग फ्रॉम इतना हाइट तक। तो ये लोग पकड़ के पूरा दिन रात, कितना, एक पूरा रात दिन वो पकड़ा। 10 होमर्स, द लीस्ट आदमी जो कम से कम 10 होमर्स, 10 वो बास्केट लिया एक आदमी ने मिनिमम। तो अभी क्या हो गया, वो खाने के पहले ही परमेश्वर का गुस्सा, द बॉडी प्लेग, द डिजीज, इनक्यूरेबल इन्फेक्शियस डिजीज, वो आया। वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ द लस्टिंग। अभी मेरा क्या बोलना है, इनको खाने को भी नहीं मिला, उधर से इतने लोग मरा फॉर द लास्ट। ओके, हम देखते हैं, आगे देखते हैं। तो रेस्पोरान अवचित वारे धाडले आणि त्या बरोबर दर्या वयल्यान लोवांचे भिरे उडोन गेले। ते सगळे मैदानार चिखलार भरले आणि मागीर तांची सुमार 2 हात उंचाची रात जाली। तर लोक तो दीस आनी ती रात आनी दुसरो दीस तांकां धरून भायर सरलो आणि उण्यान उणे दर एकल्याचेर 10 होमेर भरले आणि मैदानार तंबू भोवती ते सुकोत घाले। इतले सगोट मांस आसतना तो रेस्पोराचो राग तांचेर पेटलो आणि तांचे मध्ये पिडा धाडली आणि त्या जाग्याक किब्रोत हट्टावा हे नाव पडले, म्हणजे आशेक लागून फोंड। कित्याक मांस खावचे मिरमिरताले, तांकां थंय पुरले। हांगा तावन पोरजा भायर सरली। आय थिंक झालं ना, 34 झालं ना, 34 वय हांव। So here what we see, I will show you further why I am going through all this. ये सब स्टोरी में क्यों जाता है मैं दिखाता है। There is something called ways and acts of God. Okay, now what we see in 1 Corinthians, we were in 1 Corinthians 10, and we continued, and then we went to a place where they tempted God. Paul is saying they tempted God, and we saw what is the temptation, what they wanted meat. उन लोगों को मांस चाहिए था in the wilderness. So this wilderness place is nothing but a temptation place. So everybody is tempted, is tested. See, all your life you will be tested from one phase to another.
to go to that phase, to reach that phase, when God is taking you from one level to another, to be equipped in that place that God has called you, He will first test you in that level, and then He will take you to that place. So when you are in the wilderness place, you will be in this scenario. Yeah, this scenario where you will grumble, where there I was getting everything, here I am not getting that also. Yeah, temptation. Now we'll see in 1 Corinthians 10:7. Neither be ye idolaters. Okay? As were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose to play. Neither let us commit fornication. In 1 Corinthians 10 it says, neither let us commit fornication, as some of them committed and fell in one day. 23,000 people fell. Neither let us tempt Christ, as some of them tempted and were destroyed of serpents. This is another story where in the desert they were bitten by serpents. Neither murmur ye, as some of them murmured and were destroyed by the destroyer. This murmur is grumble. In Hebrew it is grumble. Now he's saying, listen to this. 1 Corinthians 10:11, what it says. Now all these things happened for our ensamples. Ensamples is nothing but examples. And these were written for our admonition. What is admonition? For attention, for a rebuke, for a warning, upon whom the ends of the world is come. A world here, world is aeon, age. We are in the last stage. Now we are in the last stage. After this age, Yeshua will come to take us. So we are in the rapture, before the rapture age. This is the grace age, dispensation of grace. और तुम ना तुम मूर्ति पूजक बनो, हाँ, न तुम मूर्ति पूजक बनो, हाँ। जैसे कि उनमें से कितने लोग बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे। हाँ, ये लिखा किधर लिखे थे? वो लिखे थे एक्सोडस में। वो खाने पीने बैठे बाद में और खेलने कूदने और ना हम व्यभिचार करें। व्यभिचार ऐसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। ये भाई क्यों मर गए? ये प्लेग क्यों आया? ये प्लेग पेस्टिलेंस क्यों आ रहा है? किसने बेचा? परमेश्वर ने बेचा। वो ये किसके वजह से? पाप के वजह से। पाप के वजह से क्या होता है? श्राप आता है। श्राप किससे आ रहा है? Now it is the same pattern. Now what we do in the new covenant, we say the devil. But who gives access to the devil? If devil is not given access, he can't touch you. He cannot touch you. Ultimately it is God himself. Why it is written? इधर क्या बोल रहा है? For examples. ये example के लिए दिया हमको. क्योंकि अगर हम भी चाहते हैं वैसा करने को, पहला देखेगा ये स्टोरी, अरे बाबा ये लोग सब मर गए, इसके बाद ये जल गए सब लोग,
मैं भी वो स्टेप्स में मैं गए तो मैं भी वही, मेरा भी हालत वही होगा. Now you may not be cursed as a believer, as a born again, but you are afflicted. So what is the difference between a believer and an unbeliever? What is the difference between a Christian and a non-Christian? Both are afflicted. Only he is called cursed and you are called afflicted. Both are going to the same problem here. Only he doesn't have eternity, eternal life. That after you die. But here what? Both are getting screwed same way. Why? Because both are sinning the same way. Both are sinning. That eternity is guaranteed because of the blood of Yeshua. That is only a eternity. What about here? So that is why I will come there. We will see. Paul gives a very good definition of the ways and acts. और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे. और न हम विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया. और एक दिन में 23,000 लोग मर गए. और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए. ये बहुत स्टोरी हुआ था उसमें. और एक स्टोरी है, वो सांप से काटा था, वो लोग सांप ने काटा था उनको. तो दे आल्सो इवन आफ्टर दैट वो लोग सांप में काटा, वो परमेश्वर ने क्या बोला उनको, सांप का जैसा ये करो मूर्ति. बाद में इनके बाद और हिस्ट्री देखो आगे, वो बाद में वो मूर्ति को भी पूजा करने लगा, उसको और श्राप आने लगा उसके बाद. तो मूर्ति में बहुत डेंजर है ये मूर्ति का. You are not representing God or anything. You are not representing. I will come now. Those who are not there, I will later do one summary. Not like this. This I am going round. मैं ऐसा घुमा के ले रहा है आपको डेजर्ट में. ये सब ये वैसा नहीं. मैं वो मेन जो हाईलाइट दिया what God about मूर्ति के लिए मैं वो दे रहा है, वे देगा. Because this is the main thing I can see. For me, I can come and talk to you regarding how to walk in Christ, which is very important. Because tomorrow you all will go out and come back, go in circles and come back. We can talk about how we are, because I am also in the same, I also was in the same scenario. So I am not something different, that I am just preaching something which I am not a doer of. I also have done and come out of it. So we can go through that. But then what? Those who don't know Christ, those who know Christ is a bigger blunder, because now you got to walk in it. Knowing is one thing. Otherwise you are deceived if you don't walk in it. You have to be a doer of it. That those who know, I am not interested in those people, because that is their life and their walk with God. So they will be, during judgment day, they will be having to give a account of themselves. That is not my job. I am not their boss. But those who don't know about it, this is what I am starting with Murti ka puja. और तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाया और नष्ट ये अभी डेजर्ट में क्यों लिया? वो टेस्टिंग के लिए. बिफोर कमिंग टू प्रॉमिस लैंड, God is testing them. Before God gives you something in your hand, He will test you whether you are capable to hold it. So now if God is giving you something that you cannot handle, so these अभी ये डेजर्ट में क्यों लिया? वो जब लेके जा रहा था क्या कर रहा था वो परमेश्वर? इधर लिखा है बाइबल में, क्यों लिया? वो सब टेस्टिंग कर रहा था. Whether they will sustain, they will follow His commandments, whether they will follow, He is testing them. इधर ही ये लोग ये टेस्टिंग फेज ही है, वो शॉर्ट टर्म टेम्पररी है टेस्टिंग फेज. आपके मन में क्या दिखाया वो दिखाएगा शैतान. ये तुम्हारा लाइफ ऐसा ही रहेगा. लाइफ नहीं, ये शॉर्ट टर्म है, ये टेस्टिंग फेज. बी फेथफुल इन योर टेस्टिंग फेज. सो ये यार इधर क्या बोल रहे हैं? ममरिंग 10 वापस पढ़ो. और उन्होंने कुड़कुड़ाया हम लोग भी करते हैं ना कुड़कुड़ा. और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट कर दिए गए. परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी एक उदाहरण की रीति पर थी. किसके लिए उदाहरण? क्या? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दृष्टांत. और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है. अभी थोड़े बाइबल आता है ना, ओनली न्यू टेस्टमेंट, छोटा, ओल्ड टेस्टमेंट नहीं है. तो उसका एग्जाम्पल किधर है? हमको किधर मिलेगा? ये क्या कर रहा था?
हमको पता भी नहीं रहेगा, ये सेम हम भी वही कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं. हम देखा ना, पूरा स्टोरी देखा ना ओल्ड टेस्टमेंट का, यहाँ आपको पता चलेगा ये रिलीजियस सिस्टम जो आप में है ना इधर, वो रेपिटेशन है. इसे एक्लेसियास्टिस बुक में क्या बोलता है, देयर इज नो न्यू थिंग अंडर द सन. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केले ते पोरी तुम्ही कुड्ड्या देवांक भोजू नाका, कुड्ड्या देवा भोजू नाका. कित्याक तांचे विती पवित्र पुस्तकां रोशें बरयल्लें आसा, जेवंक आनी पियोंक पोरजा बसली आनी मोजा मारून उठली. तांचे भितरले काय केले तशेंच आमी पोजडपण करचे न्हय. तांचे भितरल्या कांय जाणांनी तांतली 23,000 जाण एकाच दिसा भितर मरून पडली. तांचे मदल्या कांय जाणांनी केले तशें आमी सोमयाची परीक्षा करूं न्हय, ती सोरोप चाबून मेली. तांचे भितरले थोड्यांनी केले तुमी तुझी गुणगुणू न्हय, भोजम करणारान तांचो नाश केलो. तांकां भूत शिकोवचे खातीर हे सगळे घडले. तांकां कितें भूत शिकोवपाक एक्झाम्पल न्हू, एक्झाम्पल. सो हे आता कित्याक दिला, तुमकां शिकोवपाक. भूत म्हणजे सबक शिकाना म्हणटा पळय ते. ओके, गो फर्दर. आनी युगमा काळाचे संपादनेक पावलोले आमकां शिडकावचे खातीर शिडकावचे खातीर कितें, व्हॉट इज दॅट एक्झाम्पल? चेतावणी. No, what is example? Now all these things happened for our examples, that they were written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Examples. Where is examples? 11 मधले तांकां भूत शिकोवचे खातीर. Both, I think same thing it is. Both is a sabak. Not sabak actually. It is examples. Here it is written ensamples. Ensamples in Hebrew, I'll tell you what it is. It is a sampler, a type, a model for imitation. A model for imitation. A pattern. Pattern meaning it is nothing but an example. It is like a sampler. Like a sample. हम sample लेता है ना, कुछ भी बनाने का नया फैक्ट्री में एक सैंपल करता है पहला, ये अच्छा है तो देखता है प्रोडक्ट, उसका सैंपल, बाद में नया वैसा एक प्रोडक्ट के जैसा नया बनाता है. और अ मॉडल फॉर इमिटेशन. So this was like a model, like a pattern for our imitation, for us to imitate, to see, हाँ ये लोग क्या किया रे, या ऐसा ऐसा करता है, हम भी ऐसा किया तो क्या होगा. Yeah, then. तांकां भूत शिकोवचे खातीर हे सगळे घडले. आनी युगा काळाचे संपादनेक पावलोले आमकां शिडकावचे खातीर हे वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटोच कोण आपूण तीर उबी आसात म्हूण समजतात, झाले दिसता 11 बरोवन दवरल्यात. Okay, and I'll read 12. Wherefore lest him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Now see, lest, wherefore is nothing but thus, therefore. Let him that thinketh he standeth, that he can continue, that is इसे क्या होता है ना यहाँ, क्रिस्टी तो वो क्या बोलता था, वो पहले पीते थे, तो ये बाहर गए थे एक दिन, तो वो बोला क्या, नहीं मेरे को अभी वो नहीं होता, ये टेम्पटेशन नहीं होता है, मैं जमता है. ये क्या बोल रहा है यार, वैसा मत समझना. Wherefore lest him that thinketh he standeth take his heed lest he fall. वैसा ही हमारे लाइफ में we think what, हम spiritually strong है. What the Christian is called, Romans 12:2 says, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So what makes us different from the world? We were also of the world, but what now makes us different? We are renewing our mind. Mind is renewed. Now we are walking in that renewal of our mind. If we stop renewing our mind, where we will go? Back, rewind to the same place. वो कैसा था वैसा ही रहेगा. वो मन हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज नहीं करते तो वापस पीछे जाएगा.
to the word of. So यहाँ क्या बोलते हैं? Wherefore lest him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Just read to us. So डॉक्टर है प्रिंट. इसलिए जो समझता है मैं मजबूत हूँ, हाँ, मैं मजबूत हूँ. तुम समझते हैं आप मजबूत है तो क्या? वो सावधान रहे, हाँ, सावधान रहे. कहीं गिर ना पड़े. हाँ, मत समझना. Even your when you just even if you are growing spiritually here, when you go out continue. 2 दिवस 1 दिवस सोडना का रिलॅक्स करून. मिलिटरी ट्रेनिंग काय करतात ते मिलिटरी कंटिन्युअस त्यांचे ट्रेनिंग असता. घरानू येला ते ट्रेनिंगूच करता कॅम्पासून भायर येयल्यार. दॅट हॅज टू बी कंटिन्यू. दॅट इज आवर वॉक, क्रिश्चियन वॉक. 1 दीस 2 दीस सोडला, एनिमी विल सी. तुका दिसतला है कुछ नहीं होता है, सब बराबर है. बहुत स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, आपको पता भी नहीं चलेगा. कभी वो अटैक करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम लोगों को. It can be in any area. It can be a spiritual walk. It can be your walk now. What you म्हणटोच कोण आपूण ती रुबी आसात म्हूण समजतात तर ताणे चोत्राय धरची ना तर ती भूंय पडतीत. then it says in 13. There had no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. But with the temptation also make a way to escape, that ye are able to bear it. So what he's saying here, there had no temptation. Temptation is what? Any experience, any kind of experience or adversity, a difficult, unpleasant situation. I'm talking about when I'm doing this temptation, no any job. Whenever I'm giving you a definition of temptation, I am not giving you as per the Oxford Dictionary. I'm giving you as per the Hebrew word of what it means. So you may think, what temptation is saying something else. It may mean the same thing, because the Bible now, what they have taken, the scholars have taken, have put the words, the translator. But what I am doing now, I am going back to your Hebrew is pirasmos. The word is pirasmos. What it means is proof. What is temptation? A proof. An experience. It could be of evil. Okay. It could be an adversity. Adversity is nothing but a difficult or unpleasant situation. So there had no unpleasant situation taken you, but such that is common to men. ये common है situation. ये आपको ही नहीं आ रहा है, वो सब मनुष्य को ऐसा आता है. ये जो आप जा रहे हैं, ये आग में आप चल रहे हैं, वो सब मनुष्य वही आग पे चल रहे हैं. इट इज कॉमन टू मैन. बट गॉड इज फेथफुल, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Means what? He will not suffer you, he will not permit you to be tempted, to be tested above that ye are able. But with the temptation also make a way to escape. Okay? He will make an exit. That ye may bear it, that ye may undergo it. There had no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. There had no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful. God is always faithful. What He is looking for is a man faithful. A faithful man who can find. The Bible says a faithful man who can find. What is God is looking is for faithful people. He is faithful. He never changes. Who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but with the temptation, with the testing, also make a way to escape, that ye are able to bear it. Means what? He will also make an exit, that ye are able to undergo it. आयज पर्यंत तुमचे राहिल्यात त्यो टाळण्यो सगळ्या मनशांक येतात. सगळ्या मनशांक येता त्या ताळण्यो मारे.
देवाचेर विश्वास दवरात हाँ तुमच्यान सोसूंक जाता तेवून कोर टाळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मीचो ना हाँ पूण कसली टाळणी आयली जाय ती सोसूंक तुमकां बळ दितलो आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो हाँ ते हे बॉल्ड कितें इज ग्रेस दिस इज दॅट ग्रेस इज टॉकिंग अबाउट कॅरीस ओके तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, परंतु परीक्षा के साथ उपाय भी करेगा कि तुम सह सको। This is the main thing. Any temptation, you have to know that God will not give you. The temptation won't come that you are unable to bear it. You are unable to undergo. God will give you the grace along with that temptation. ते आता हिंगा bold म्हणतात. The ability. So it says in 1 Corinthians 10:14, I'll just go till, wherefore my dearly beloved, see, wherefore my dearly beloved, flee from idolatry. And where else we see flee from what? Anybody knows? One more place it says. Now yes, yeah, ye kya? This is actually a solution to the problem, idolatry. Wherever जिधर मूर्ति का पूजा होता है ना, आप भाग सकते हैं, तो ये बोल रहा है भागो, उधर से भागो, उधर रुको भी नहीं, भागो. दैट इज द ओनली ऑप्शन. और एक जगह है वो भागने को बोलता है, वो किधर है? मैं बोला था आगे, उसके इसके पहले मैं बोला था. एनीबडी नोज? देयर वन मोर थिंग, वन मोर सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम, वेयर ही इज सेइंग द ओनली सॉल्यूशन इज रन. लड़के लोग का हाँ लड़के लोग का हाँ फॉर fornication, flee fornication. Flee youthful lust. Bible is saying flee fornication, flee youthful lust. The only solution, Joseph and Kirakala, what did Joseph do from Pontiphas's wife? He ran. Only solution is run. वो कपड़े निकला, कपड़े छोड़ के भागा, वो भागा, कपड़े नंगा था तो पता नहीं, मगर भागा वो कपड़े छोड़ के उधर. Because if you sit there, you will get trapped in that. So here the second solution, the another place where it is saying is idolatry, idol worship, मूर्ति का पूजा. जहाँ मूर्ति का पूजा होता है ना, उधर मत रुको. आपको पता है, हाँ ये लोग कम्युनिटी करता है, मैं भी जाता है, देखता है, मैं उस पे भाग नहीं लेता है. भाग नहीं, थोड़े टाइम के बाद आप भी लेगा भाग. भागो उधर से, ये बोल रहा है. प्रीतीच्या इष्टा इष्टिणीनो कुड्ड्या देवांची पूजा सामकीच सोडून दियात. हाँ सामकीत. वाव, व्हाट अ फ्रेज, व्हाट अ फ्रेजिंग. सामकीत सोडून द्यात. सामकीत बोट पासून दोन नाका थिंगा. सामकेत भायर यो, बोट पासून घालना का थिंगा, यो भायर. पळया हे हिंदी कितें म्हणटा ते सुडयता मरे. इस कारण हे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो. हाँ and then what he says, I speak as to wise men, judge ye what I say. Huh? Judge means discern what I say. He's saying, I'm speaking as to wise men. Judge ye what I say. Discern what I say. Then what he says, आता आहे का? The cup of the blessing which we bless, is it not the communion of
the blood of Christ, the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Huh? For we being many are one bread and one body, for we all are partakers of one bread. Behold, Israel means see. Israel after the flesh, are not they which eat the sacrifices partakers of the altar? Are not ye that eat the sacrifices partakers of the altar? मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक ही शरीर है, क्योंकि हम सब उसी एक कटोरे में से भागी होते हैं। अभी ये सुनो, जो शरीर के भाव में से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदान के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? 10, 18 no 18. जो शरीर के भाव से इजरायली है, विश्वास, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? Means what? Yeah, you read also. 15 to 18. तुम्ही समजिकायेची मनशां म्हूण धरून हांव तुमचे लागीं उलयतां। हांव तुमकां कितें सांगता तें तुमीच चिंतून पळयात। ज्या पात्राचेर आमी आशीर्वाद घालता, ते आशीर्वादाचे पात्र क्रिस्ताच्या रक्ता कडेन आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय। एकूच उंडो देखून जायतीं जाणां जावनूय एकूच कूड आमी, कित्याक आमी सगळीं त्याच एकाच उंड्यान वांटो घेता। जुदेव लोक कितें करता आनी स्वता मानता तें मनान हाडात, भेटयल्ल्या बोलयांचे खातात आनी ती वेदी लागीं समजोन जोडिनात। So yeah, this no, I will do one this I now I am knowing about these altars, no, altar is a most powerful and dangerous thing. So even witchcraft and all they do in altars. Anything you want to do, no, to do in spiritual, you have to do in an altar. Even till date it works. Altar. We'll talk about godly altars. Even in heaven today, right now, there are altars. In the book of Revelation, it talks about. Even Yeshua, he went with the blood in the highest of heavens and sprinkled it on altars in heaven. This blood is not sprinkled anyway. It is sprinkled in mercy seat. Even mercy seat, throne of God, is an altar of God. Okay, we'll talk about altars. But here, this story, ये क्यों बोल रहा है ये स्टोरी? पॉल क्यों बोल रहा है? ये लोग क्या कर रहे थे? थोड़े लोग बाहर के लोग, मतलब अनबावर्ती जो विश्वास नहीं करते थे, वो अपने भगवान को मांस लेके उसको रखता था, पिटता था वो अल्टर को, और लेके बाजार में बाद में बेचते थे। तो भाई ये लोग पूछ रहा था पॉल को, ये खा सकते हैं हम लोग? ये उसको मूर्ति के लिए बिठाता है वो भगवान को। तो यही से आर नॉट दे विच ईट of the sacrifices partakers of the altar? Aren't you a co-partner of that altar when you partake you eat of that the sacrifices of that altar? Now it says we will deal with that altar after, don't get confused with that. What say I then? 19. What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idol anything? Paul बोल रहा है, is an idol anything, or that is offered to an idol anything? ये मूर्ति कुछ है, और the sacrifice, वो जो बिटता है मूर्ति को कुछ है,
ये सिर्फ पत्थर, कुछ दिखता नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ है इधर, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, और बाद में बोलता है but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye have fellowship with devils. अभी ये जवाब दे रहा है. Don't think that by making an altar, by making a idol worship, you are sacrificing to the God that you know. You are sacrificing to a devil. There is no neutrality in the spiritual realm. If God has told you stop it, just stop it. It is a commandment. It is abomination with God. And here what you are doing is, we will talk about altars. When you keep doing something, you keep doing that prayer thing in that room becomes consecrated, whatever it may be. Spiritual entities come to that. Supposing अभी मैं एक कुछ भी पत्थर लिया या नाल लिया कुछ लिया और उसका पूजा करते रहा, that will become a spiritual entity. It becomes a platform like a helipad for spiritual beings to come on earth. It becomes so now if it is not of God, you are attracting demonic entities. On that we will talk about in altars. So now what he says, we'll talk about all the altars where the stories of altars are given. We'll see. So here what he's saying, but I say that the things with the Gentiles is what? The unbeliever, the pagan. We call him pagan. Who we call pagan? That person who does not worship your God, who you believe is the true living God, that person is a pagan. So now the Gentiles, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice unto devils. So now what they are doing, where they are sacrificing, those Gentiles who are doing, they are thinking it is their God. जो वो लोग करता है, वो भी बोलते हैं वो हमारा भगवान है. Now what the Paul is saying, they are not simple idols. वो जैसा मूर्ति नहीं है लकड़ी का कुछ. अभी क्या, now it is become a spiritual entity. Spiritual entities are coming. We will see in altars. अभी देखो अब्राहम ने एक ऑल्टर डाला था. दो पीढ़ा के बाद आइजैक और जाकोब जाता है, वही जगह पे सोता है. वो क्या देखता है उधर? वो सब एंजल्स क्या आंच ऊपर नीचे जा रहे थे उधर. व्हाट इट इज बिकम? दैट प्लेस विच अब्राहम his grandfather had made an altar there. That altar, वो altar जो किया था, now that is become a trading point, an open portal to spiritual entities. Now when Jacob is sleeping, he doesn't know that is an altar. He's sleeping. Now what his grandfather did, that is become an open portal. Now he's seeing in the vision, he's seeing angelic beings going up and down the golden steps. And then what happens? God is coming and speaking. Why at that place? Why God didn't speak to him anywhere else? If you when you see why God didn't speak to him, he was in need of God's word for that time. He didn't get God's word. He went to that destination. Whatever you are doing, altars, all idols, everything a flame. Altar is what? Anything that is sacrificed. If you sacrifice, and they used to
In the old covenant, the Jews used to sacrifice animal, sacrifice the blood. Okay, so that was fueling the altar. Now you don't have to sacrifice any blood. The blood of Yeshua is done deal. But now when you do the praying or mangane kotta to an idol, thinking you're doing it to God, you're not doing it to God. Paul is saying you're doing it to the devils. You're bringing demonic entities. You're pulling demonic because God has commanded you. हम देखा था in Exodus 20, God has said nothing in heaven, no in earth, no under the earth to be worshipped. Then today आम्ही पहिले what we saw, no मूर्ति of male or female, any मूर्ति, कौन सा भी मूर्ति मत करो बोलते हैं. और यहाँ तुम लोग करते हैं तो अभी क्या करते हैं हम देखते हैं 20 वेयर आई स्टॉप 19 20 रीड अभी सुनो हाँ दोनों लैंग्वेज का. फिर मैं ये क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है वो पूछ रहे कुछ है या वो मूर्ति क्या है. एक मूर्ति मूर्ति कुछ है है. मट्टी का वो कुछ है बलिदान चढ़ाया तो कुछ है. या मूर्ति कुछ है नहीं, वरन यह कि अन्यजाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान दुष्ट करते हैं. आत्मा के लिए. अभी तुम मूर्ति बनाता है, यीशुआ बोलता है तुम यीशुआ को मूर्ति बनाता है या ये दुष्ट आत्मा आता है उधर. नाउ दैट इज बिकम अ कॉन्सिक्रेटेड. नाउ अभी डोंट प्ले विथ ऑल्टर्स. आई एम कमिंग, व्हाई आई एम डूइंग दिस मूर्ति का पूजा फर्स्ट. Because if I go and teach you all how to walk as Christian, you will walk and see no result, zero result. You will say, ये बेस्ट बुरे ले हा, ये काय चला ना लाइफ ऑन मुझे. Why? ये क्यों नहीं चल रहा है? जो कोई पीड़ा था आपके, वो मूर्ति का पूजा कर रहा था और अभी आप भी कर रहे हैं. आप छोड़ा है, मगर वो जो कर रहा था वो अभी तोड़ा नहीं. वो covenant, you have brought that covenant in your bloodline. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवाक भेटयलेल्या काणाक कसले तरी मोल आसा म्हूण सांगता, व त्याच कुड्ड्या देवाक कसले तरी मोल आसा म्हणटा ना की ना. म्हजो अर्थ असो, पवित्र पुस्तकाची उतरां न्ही, ज्यो युद्ध ओन भावार्थी भेटयता ते देवचाराक भेटयता, देवाक भेटयना. मागीर देवचार लागीं तुमचो संबंध आसलेलो म्हाका नाका. नाका म्हाका समज. तुम्ही कित्याक संबंध करता? देवानूच तुका पयलीं सांगला. हांवें सांगू ना तुका तुम्ही कित्याक करता. तुम्ही तरी पूण कोत्तात तेका भेटयता म्हणून. पूण हांगा आतां तुमी कोणाक अट्रॅक्ट, whom you are attracting, what spiritual entities? मेळ्ळे आत्मा. सोमयाच्या पात्रांतले आनी देवसाराच्या पात्रांतले तुमच्यात बाराबोर पियोंक जायना. पळय, now I'll read that. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and the table of the devils. You can't be both the partakers. सोमयाच्या जेवणाक आनी देवचाराच्या जेवणाक तुम्ही बाराबोर बसूंक जायना. आम्ही परस्पराची प्रेमाशात चलोवंक सोदता कितें, ताचे परस आम्ही अदीक बलिश्ट. तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते. तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते. क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Yeah, what is saying jealousy? God's name is a jealous God. His name is jealous. There's a place I will show you.
His name is jealous. His name is jealous. His character is jealous. Don't fool with God. You can fool with the devil. Don't fool with God. Here you are fooling with God. He's saying, after doing all this Murti Puja, are you provoking the Lord to jealousy? Are we stronger than He? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अनजाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। और मैं यह नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? आम्ही सर्वूण हांव कितें म्हूण सांगूंक सोदता, कुड्ड्या देवाक भेटयल्ल्या काणाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण सांगता, वो त्याच कुड्ड्या देवाक कसलें तरी मोल आसा म्हणटा? ना की ना, म्हजो अर्थ असो, पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जेवण बावर्ती भेटयतात ते देवचाराक भेटयतात, देवाक भेटयनात। देवचार लागीं तुमकां संबंद आसलेलो म्हाका नाका। सोमयाच्या पात्रांतल्यान देवचाराच्या पात्रांतले तुमच्यान बराबर पियोंक जायना। सोमयाच्या जेवणाक आनी देवचाराच्या जेवणाक तुम्ही बराबर बसूंक जायना। आमी परस्पराची प्रेमाशा चलोवंक सोदता कितें? ताचे परस आमी अदीक बलिश्ट It's